Hello, everybody. Welcome to my channel Flight Pro. You are watching Microsoft Flight Simulator, and today we are flying from Istanbul to Barcelona, which is in Spain, with Spanish airline, Spanish regional low-cost carrier, which is called as Vueling airline. And this is going to be our 3-hour journey from one of the Istanbul's airport, Ataturk, where we landed last time. If you would like to check my last video, you can check. यहाँ से हम take off करेंगे. Runway 05 is going to be our takeoff runway. This is our airport through which we are flying, and this is the beautiful city of Istanbul. It's a very very big city. तो आज हम यहाँ से fly करेंगे Airbus A320 fly by wire, और ये Microsoft Flight Simulator 2020 है. 2024 मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया है, विच इज़ एट द मोमेंट नॉट रिक्वायर्ड. हमारा एयरपोर्ट आज खाली है. इन फैक्ट मैंने AI इंजेक्टर भी डाला है. उसके बावजूद मुझे कुछ खास एयरक्राफ्ट यहाँ आते हुए दिख नहीं रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली. तो दिस इज़ व्हाट आवर एयरपोर्ट लुक्स लाइक एट द मोमेंट. और हम यहाँ से, ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट, और हम यहाँ से पुशबैक करेंगे. पुशबैक करने के बाद हम इस तरफ से जाएंगे, यहाँ से एग्ज़िट लेंगे. सो चलते हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ. ये है हमारा एयरक्राफ्ट, Vueling एयरलाइन, vueling.com. ऑलराइट, आई होप यू कैन see this one. Let's go inside our cockpit. ऑलराइट, हमारे पास ये जो एयरक्राफ्ट है, ये A320 न्यू है, और इसके जो कैमरा सेटिंग्स हैं, ये मैंने सेट की हुई हैं. कैमरा सेटिंग्स इस तरह से सेटिंग्स हैं. मैं आपको बार बार दिखाता रहूँगा हमारे सेटिंग्स. ये बेली व्यू है. जब हम टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग गियर अप करेंगे तो हम इस पे जाएंगे. और ये इस तरफ का विंग व्यू है, इंजन व्यू है. तो आपने पुरानी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि मैंने एयरक्राफ्ट शुरू से स्टार्ट किया है, कोल्ड एंड डार्क सिचुएशन से स्टार्ट किया है. आज फिर से हम वही करने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा क्विक करेंगे ताकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. एक्सटर्नल पावर ले लिया, IR1, IR2 एंड IR3. राइट, क्रू सप्लाई ऑन कर लिया यहाँ पर, just to check notifications. Right, okay. Fuel pumps उसे पहले. Alright, this is working. Engine 1 fire, APU fire, APU fire, this is working. Engine number 2 fire. All right, wonderful. These three are working. Okay, fuel pumps on. डोर, कॉकपिट डोर अनलॉक कर देते हैं इस टाइम पर. लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसीजर. 3 घंटा 10 मिनट की फ़्लाइट रहनी चाहिए. और सबसे पहले यहाँ हम सेट कर लेते हैं. ये है हमारे सर्किट ब्रेकर्स. कुछ ख़राब होता है तो हमें यहाँ से देखना है. उसके बाद ये सारा चीज़ देख लिया. बीकन लाइट अभी थोड़ी देर में ऑन करते हैं, अभी बीकन लाइट की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़िट लाइट, एमरजेंसी एग्ज़िट लाइट्स हम आम कर देते हैं. सीट बेल्ट साइन ऑन, no smoking sign on. Right, all right. हमारा इंपोर्ट कर लेते हैं सिम ब्रीफ से, लेटेस्ट वाला. ये लेटेस्ट वाला नहीं है. लेट मी रिक्वेस्ट द लेटेस्ट वन. ओह या, दिस इज़ द लेटेस्ट वन, सॉरी. ओके, सो हमारा फ्यूल जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 10,000
केजीज़ का, 10,100 केजीज़ का। अभी फ़िलहाल हमारे पास 2500 केजी है फ्यूल, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिल ब्लॉक फ्यूल फ्रॉम सिम्ब्रीफ, राइट, इसको प्ले कर देते हैं। रिफ्यूलिंग, सो ये राइट आउटर टैंक, लेफ्ट आउटर टैंक फिल होना शुरू हो गया है यहाँ पर। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। पेलोड, पेलोड के लिए हम अपनी सर्विसेज, ओप सॉरी, ऑलराइट, पेलोड के लिए हमारी सर्विसेज ऑन करते हैं। इसको रिक्वेस्ट करते हैं प्लान्ड एंड करंट, दिस इज़ प्लान्ड एंड दिस इज़ करंट। 174 पैसेंजर्स के साथ जा रहे हैं हम। 4056 केजीज़ का कार्गो रहेगा और ज़ीरो फ्यूल वेट रहेगा 60,000 केजीज़ का। ऑलराइट, ज़ीरो फ्यूल वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी 33.07 की, और करंट है अभी जो है 29.98 है। इसके लिए हम सर्विसेज पे जाएंगे, हम जेट ब्रिज रिक्वेस्ट करते हैं। ऑलराइट, जेट ब्रिज रिक्वेस्ट कर लिया है एंड नाउ वी कैन रिक्वेस्ट आवर पैसेंजर्स टू कम। बोर्डिंग हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, 3-3.5 मिनट का, या रियल टाइम रख लेते हैं 15 मिनट्स। इट्स गोना बी वेरी मच रियल, 15 मिनट्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लेट्स स्टार्ट बोर्डिंग ना, लेट्स बिगिन बोर्डिंग। यहाँ लोग आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए सीटें भरनी शुरू हो गई हैं। 2 कैबिन्स के साथ जा रहे हैं आज हम, बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी। दिस इज़ व्हाट स्टैंडर्ड 2 कैबिन पॉलिसी इज़। छोटे एयरक्राफ्ट में यही पॉलिसीज़ होती हैं, एक बिजनेस क्लास होता है और एक इकोनॉमी होती है। कुछ एयरक्राफ्ट्स में, कुछ एयरलाइंस प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी रखती हैं। प्रीमियम इकोनॉमी में थोड़ी सी ही कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा हाई फाई चेंज नहीं होता। बिजनेस क्लास एज इन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलता, बहुत नॉर्मल सी कंफर्टेबल सी सीट होती है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा मिलता है, लेग रूम ज़्यादा मिलता है, बस और कुछ नहीं। सो सिंस इट इज़ अ लो कॉस्ट कैरियर, यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते। राइट, उसके बाद ये हमारे पैसेंजर्स आने शुरू हो चुके हैं। रिक्वेस्ट करेंगे हम अपना फ़्लाइट प्लान आगे बढ़ाएंगे। राइट, ये हमारा एक्टिव नैव डेटाबेस है, 23rd Jan to 20th of February, which is the active one at the moment. Alright, let's go to data. पोजीशन देख लेते हैं हमारे GPS की और हमारे FMS1, FMS2, IRS की पोजीशन तीनों अलाइन है। वंडरफुल। सबसे पहले इनिट पे जाएंगे। इनिट पे जाने के बाद रिक्वेस्ट करेंगे हमारा जो फ़्लाइट प्लान है। फ़्लाइट प्लान सिम्ब्रीफ से मैंने इंटीग्रेटेड किया हुआ है इसमें, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ सारा कुछ फीड हो जाएगा। एंड देन हमें सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग, रनवे और डिपार्चर स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर और स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल रूट डालना होगा। इसके अलावा हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपलोड हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो वी कैन वेट फॉर सम टाइम। देखिए फ़्लाइट नंबर आ चुका है 2133 व्यूलिंग, LTBA to LEBL. LEBL is Barcelona. LTBA is Ataturk International Airport. So this is what it is. इनिट पे आ गए। इनिट पे हमने देख लिया है। फ्लाइट प्लान पे जाते हैं। सबसे पहले डिपार्चर रनवे सेट करेंगे। डिपार्चर रनवे सेट कैसे करेंगे? लेट मी हैव अ लुक, लेट मी शो यू हाउ वी सेट आवर डिपार्चर रनवे. So this is what Navigraph chart is all about. Thank you very much. So this is what Navigraph chart is all about. And it comes into picture. This is the runway. This is the airport. यहाँ पर हम खड़े हैं स्टैंड 33 पे, और यहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे 05 रनवे से यहाँ से, और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर रहेगा हमारा VADEN का, VADEN 3A. हमें जाना है इस तरफ, तो हमारा जो ये पाथ है, हमें ये वाले पाथ We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to see final numbers from the ground crew, then we'll be on our way.
Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Thank you very much. Wonderful. So we're going to take this path, and through this path we're going to fly towards VADEN. यहाँ से हम exit लेंगे. This is our standard instrument departure. VADEN 3 Alpha. Right. Transition altitude is 12,000 feet. Rudder as required. Airport elevation is 94 feet above median sea level. These are the frequencies for approach and rudder. No turns prior to DER. No turns prior to DER. Where is DER? We'll see to it later. Right. So ये थोड़ा थोड़ा हमें अंदाज़ा सा लग गया है कि हमें फ्लाई कैसे करना है. Let's begin our departure. Departure रहेगा runway 05 as we discussed, and departure रहेगा हमारा VADE 3 Alpha. VADE N 3 Alpha. Alright, VADE 3 Alpha. This is set, insert. Perfect. And then all the way down to our landing, Barcelona. Arrival is going to be on our runway 24 left. 24 left. We can select ILS runway 24 left. And arrival, let me show you arrival, how we're going to do arrival. So arrival, there are 3 arrivals here. So we're going to choose this shorter one. This is the longer one. ये दोनों north से जो aircrafts आ रहे हैं उनके लिए हैं. हम east की तरफ से आ रहे हैं. तो BISBA to Zulu. Let me check. BISBA to Zulu. BISBA to Zulu is going to be our arrival. All right. Via. So it's asking via. Let me check via point. I'll just check via. DIVKO. Via. There's no via, so we will put no via. That's okay. Insert. अभी के लिए हमने ये ऐड कर लिया है, and we will see to it later. Let's quickly go to radio navigation. This is already set to Istanbul at the moment, which is fine. What we're going to do is we're going to change our this to VOR. Nobody uses ADF at the moment. Currently एयरलाइंस में ADF यूज़ नहीं होता, VOR ही यूज़ होता है. कॉन्स्टेंट इन्फो डिस्प्ले ऑन कर लेंगे दोनों तरफ. फ्लाइट डायरेक्टर तो ऑन है ही. एंड लेट्स सेलेक्ट दिस वन एज 12,000 फीट. जैसा कि हमने देखा 12,000 फीट हमारा ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड है. लेट्स गो बैक. दिस इज़ ऑलरेडी सेट, वी डोंट हैव टू टच एनीथिंग. एंड देन अगेन गो टू इनिट एंड देन गो टू नेक्स्ट पेज. ज़ीरो फ्यूल या तो आप यहाँ मैनुअली टाइप कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं. 33.1. लेट्स सी हियर 33.07. लेट्स सिलेक्ट अगेन. राइट, this is already confirmed. We can confirm this one. Block fuel is 9720. I think this is at the moment filling up. Let me have a look again. Fuel is refueling. Yeah, okay, fine. So what we're going to do is we're going to put block fuel as 10,000 kgs here. Right, this is now alive. ठीक है जी, फ्यूल सेट हो गया हमारा. And then program. Destination is going to be our Barcelona. So Barcelona का जो कोड है वो आपको यहाँ पे भी दिख सकता है. LEBL, which is here. LEBL. Let's discuss this page first. Cost index is going to be 23. Ground distance is 1310 nautical miles, I think. I don't know. Anyways, हमारे जो ट्रिप रहेगा वो 3 hours 26 minutes का रहेगा.
फ्यूल रहेगा, जो फ्यूल बर्न होगा 7192 का, कंटिजेंसी फ्यूल रहेगा 15 मिनट्स का 522 kgs, ऑल्टरनेटिव फ्यूल रहेगा 1100 का, फाइनल रिजर्व रहेगा 914 का. So the minimum takeoff fuel weight is 9792. It's gonna be total 4 hours and 46 minutes. There is no extra fuel we are taking. Taxi is going to be around 230 kgs. इतना हम बर्न कर लेंगे अभी टेक ऑफ करने से पहले. And then total block fuel you are able to see is 10,022. So that is the reason why I have mentioned here fuel is 10.0. All right. So LEBL डाल लेते हैं यहाँ पर. So this is all set. This is the total distance we have, 1,203 nautical miles. The final bearing is 274 degrees. Because we have mentioned 24 right as our landing runway. Wonderful. Performance. We can check our performance here. We're going to fill our data from our Navigraph charts. QNH is 1017, runway 05, runway elevation is 91, conditions are dry at the moment. Wonderful. Let's calculate. Flex is going to be our configuration. Toga nahi rakhenge. And then V1, VR and V2 is here, 140, 142 and 145. So 140. $142, $145. Flaps 1. And then UP.1. Alright, flex to temperature is going to be how much? 57 degree flex to temperature. Right, let's select. Next phase. This is already selected, managed. Next phase is gonna be 0.78. What we can do is we can put 0.79 or 0.80 if you want to go faster. But this is already managed, so let's do this. Pre-select 0.79. All right. Let's see what happens. फ्यूल हम ज़्यादा बर्न करेंगे, थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे 38,000 फीट पर. यहाँ पर यही मेंशन है. ये जो प्रीवियस फेज़ में क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड है, क्रूज़ हम जब करेंगे 38,000 फीट पे. आई थिंक 38,000 फीट है. लेट मी हैव अ लुक वंस अगेन. हियर इट इज़ इन 380. ऑलराइट, पेलोड इज सेट, फ्यूल इज सेट. लेट्स सी सर्विसेज. लेट्स डिस्कनेक्ट जेट ब्रिज. We just need to give 5 more minutes to our cargo load. All right, this is done. Let's remove baggage truck and let's close cargo door. All right, let's start our auxiliary power unit.
APU is started. APU bleed is on. Beacon light is on. Nav light. Nav and logo. Thank you very much. Let's close this door now. Door is locked. Okay. And furthermore, let's remove external power. We don't need external power anymore. Ground power unit is removed now. We don't need ground power unit. We are on our own. Let's see if wheel chocks are removed. Yes, they are removed now. Checklist. Gears are gear and pin remove. Gear pins and covers removed. Flight fuel quantity checked. Seatbelt sign on. ADRS checked. Barrow reference is checked. Once again, let me have a look. I think I'm making some kind of mistake here. Let me have a look. Takeoff. QNH is 1017. So let's figure this out now. 1017 is now set, and rest everything which I am able to see is confirmed. Right. So 12,000 feet is now set. Other than that, nothing else is required. Right. Let's move back. Before start checklist, mark as complete. Parking brakes set as required at the moment. Takeoff speed, thrust checked. Windows and doors closed. Beacon light on. All right. Before start checklist is now complete, we can start our engines. But before that, let's do the pushback from this airport, and let's go out. Alright, parking brake release. Let's start this engine first. Engine number 2. Ignition mode, start mode. Engine number 2 is on. Alright, parking brake लगा लेते हैं. And let's say thank you very much. Thank you. Engine number 2 is on. Let's check engine number 1. Engine number 2 on है. Let's start engine number 1. All right. This is on now. Let's put this back to normal position. Let's see. Yeah, bleed air is going at the moment. Ground spoiler up. Flap 1 departure रहेगा आज हमारा. So it's gonna be flap 1. Flap 1 departure. 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 1
Alright, flap 1 is done. Let's go back. Let's complete checklist before taxi checklist. Proceed to next. After start, anti-ice is checked. ECAM status normal. Pitch trim is checked. Rotor trim is neutral. After start checklist. Flight controls. Alright, let's do flight controls check. Flight controls. Here is flight controls. Full left. Full right. Center. Forward. Back. Center. Rudder trim left. Right. Center. Flight control checked. Flap setting is done. Rudder and predicted wind shear is on or auto. Engine mode selected normal. ECAM memo. Takeoff no blue. Takeoff no blue. There is no blue. Here there is no blue. Okay. Now next cabin is, let's mark cabin. Ready to take our aircraft forward now. Alright. ये करेंगे अभी थोड़ी देर में. Line up and let's release parking brake. But before that, a very important step is auto brake set to max. Okay, auto brake set to max. Now it's all good. Wonderful. Let's release parking brake. Parking brake is now released. थोड़ा सा throttle देंगे. Nose light जला लेते हैं. APU कर लेते हैं बंद. APU bleed is of course off now because it is not required. I just forgot to do that. That's okay. Notified cabin as well. Rest, everything is alright. Okay. Alright. Parking brake is on now. Let's check if any other aircraft is coming or not. If not, then we can start our journey. Nobody's coming. Strobe light is on. Landing lights on. Runway turn lights off. Nose light to take off. Seatbelt sign is off. On. Takeoff runway. TCAS is. Let me check TCAS. And then let's set to all TARA, sending and receiving. Auto. Flight attendants, please prepare for takeoff. Alright, please prepare for takeoff. Takeoff configuration, normal. Alright, takeoff configuration is now normal. Forward call is also done. Pax 1 and 2 is line up. Barrow reference is checked. Seatbelt sign is on. Minimum as required. Auto brake full. Engine mode selector on. Alright, let's release parking brake. Alright guys, let's put parking brake once again. Camera set कर लेते हैं यार for a better view. This is gonna be a good view now. Alright, view is now set. If you haven't subscribed to my channel, I would request you to please consider subscribing now and hit the bell icon. You will get upcoming notifications. Let's go out of this runway and this airport. Alright, release parking brake. Parking brake is now released. So हमारा flex takeoff रहेगा. 30% power. Flex 57 SRS runway auto thrust blue. Airspeed alive.
V1, rotate. Positive climb, gear up. ऑटो थ्रस्ट एंड ऑटो पायलट ऑन करके बाहर चलते हैं. लेट्स सी बाहर के नज़ारे. लेट द एयरक्राफ्ट वर्क इटसेल्फ. Alright, I think we're going to take a little bit of turn now. बाय बाय कह दिया हमने इस्तांबुल को, बाय बाय कह दिया हमने टर्की को. लेट्स गो इनसाइड आवर कॉकपिट. यहाँ से देखते हैं क्या नज़ारे हैं. खूबसूरत देश, खूबसूरत शहर. लेट्स गो हियर. Normally, I don't really give my aircraft to autopilot very soon because I love flying manually, but because this is one beautiful takeoff, I wanted you guys to look at this. Look at this one. ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत. ये स्टारबक्स कॉफ़ी पड़ी हुई है मेरी, और ये खूबसूरत एग्ज़िट ये इस कंट्री से एग्ज़िट लेने का व्यू बहुत अमेजिंग है. आई जस्ट लव दिस व्यू. हाउ अबाउट यू गाइस? ओके, एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा दूँ. हम 12,000 फीट तक जा रहे हैं, और 12,000 फीट के साथ साथ यहाँ आपको एक मजेंटा डॉट दिख रहा होगा. ये मजेंटा डॉट इस चीज़ को शो करता है कि आपकी जो टारगेटेड स्पीड है वो यहाँ तक आने में, यहाँ तक आते आते पहुँच जाएगी. ये टारगेटेड स्पीड है. अब ये मजेंटा डॉट यहाँ पे भी दिख रहा है और मजेंटा ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है. तो एयरक्राफ्ट अपने आप मैनेज कर रहा है 250 नॉट्स की स्पीड. Now it is going ahead. Now it is approaching because we are crossing 10,000 feet, so we can turn our landing lights off, retract, nose light off, strobe light on, navigation on. This is fine. Seatbelt sign comes off. अब देखिए यहाँ से मैं एग्ज़िट ले रहा हूँ और यहाँ कोई मुझे मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड का रिस्ट्रेंट नहीं दिया गया है. Which means what I can do is I can quickly jump to altimeter and I can set my altitude to 38,000 feet, which is my ultimate cruising altitude. So जैसे ही यहाँ क्लिक किया मैंने, ये थ्रस्ट लीवर्स, थ्रस्ट पावर्स अपने आप बढ़ने लगी, एग्जॉस्ट टेम्परेचर्स बढ़ने लगे, मुझे पावर मिलने लगी ताकि मैं जल्द से जल्द उस टारगेटेड स्पीड तक पहुँच सकूँ. All right, let's go out. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्लू कलर में मार्क सिलेक्ट 0.79, ऑल्टीट्यूड इज़ ऑल्सो सिलेक्टेड, हैज़ अ कलर, सेम कलर, एंड 38,000 फीट हैज़ ऑल्सो द सेम कलर. तो ये जो 3 सेम कलर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट ने अपने आप मैनेज नहीं करना. आपने जो
इनपुट दिया है उस इनपुट पे एयरक्राफ्ट अब चलेगा। आपने इनपुट दिया है 38,000 फीट का, आपने इनपुट यहाँ दिया था क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड का। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ परफॉर्मेंस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे जाके क्रूज़ पे आपने 0.79 दिया है, ये ब्लू में है। 0.78 मैनेज्ड है एयरक्राफ्ट का, ठीक है जी। आपने कहा जी नहीं, हम मुझे 7.79 पे फ्लाई करना है, तो 0.79 पे आपकी बात रखी गई और 38,000 फीट आपका सिलेक्टेड है ऑलरेडी। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ QNH हम सेट करके इसको स्टैंडर्ड कर लेते हैं। QNH इज़ नाउ स्टैंडर्ड, शुड हैव बीन स्टैंडर्ड आफ्टर यू गो अबव 10,000 फीट, बट दैट्स ओके। आई वॉज डिस्कसिंग समथिंग, सो इस चीज़ में मिस हो जाता है, इट इज़ ओके। Another thing is, if for example not at the moment flight level 380 तक आते आते if we decide कि मुझे 0.79 की जगह 0.78 पे जाना है, then I am not sure I can do that or not, but this is something which I can do it now, क्योंकि अभी हम क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे नहीं पहुँचे हैं। बट जैसे ही हम क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाएंगे, आई माइट नॉट बी एबल टू सिलेक्ट 0.78 which is managed, which is in green, which is also been calculated by the aircraft systems. All right, we are in our cruising altitude and we are here at the moment. Or let's see if I am able to change this 0.79 to 0.78 as standard. Let's see how it works. 0.78 estimate is fine, ये हम बाद में भरेंगे, but I'm at the moment, oops, nope, previous phase. No, there is no option for me to change this selector from 0.79 to 0.78. What I can do is I can manually reduce from here to 0.78. That will reduce my thrust, my engine's thrust a little bit, and it will again come down to 0.78 instead of 0.79. So that way you can reduce the speed and manage the aircraft accordingly. अभी फ़िलहाल 1 घंटा हो गया हमें फ्लाई करते हुए, टेक ऑफ करते हुए, और क्रोनो पे दिखा रहा है 59 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। सो अभी फ़िलहाल 1 घंटा हमने 0.79 मार्क पे फ्लाई किया है। अब हम इसको रिड्यूस करके 0.78 कर देते हैं, which is going to be enough. Heading mode is fine, automated selector है, automatically selected है, sorry. And I will see you in approach and destination. All right, everybody, welcome back to our top of descent section, wherein I would like to tell you this is a ring which I've created within the MCDU. यहाँ पर आप अपना फिक्स इन्फो डाल सकते हैं, जिसमें कि इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट मान के 86 न्यूटन मीटर्स का एक सर्कल बनाया मैंने, जिससे कि ये पता लग सके मेरा टॉप ऑफ डिसेंट कहाँ है। तो अगर मैं इसको, आप मेरी पुरानी वीडियोस में चेक कर सकते हैं मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया है। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो ये एक लाइन ऐसे आपको शो होती है, ये आपको बताती है कि ये आपका टॉप ऑफ डिसेंट है। यहाँ पर आप डिसेंड करेंगे तो आपको उस पॉइंट तक आते आते 12,000 फीट तक आने का मौका मिल जाएगा आसानी से। दूसरी बात यह है कि
जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप ऑफ द डिसेंट, मैं डिसेंट कर लेता हूँ यहाँ। डिसेंट में अभी है थोड़ा सा टाइम, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जूम आउट करता हूँ मैं, यहाँ लिखा है BISBA। ये जो पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल रूट का फर्स्ट वे पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है फ्लाइट लेवल 25,000 या फ्लाइट लेवल 250 से नीचे और फ्लाइट लेवल 120 से ऊपर। तो हमने 120 रखा है क्योंकि हमें आगे फ्लाइट लेवल 100 पे जाना है, यानी कि 10,000 फीट पे जाना है यहाँ पर। एंड देन सब्सिक्वेंटली वी नीड टू रिड्यूस आवर ऑल्टीट्यूड मैक्स टू 50 नॉट्स एंड देन बिलो 10,000 फीट, बट यहाँ लिखा है अबव 8,000 फीट। तो हम यहाँ से आने के बाद, क्रॉस करने के बाद हम सीधे फ्लाइट लेवल 8,000 फीट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फर्दर डाउन दिस इज़ गोइंग टू बी आवर 2,300 feet is going to be our final altitude. So अब हम टॉप ऑफ डिसेंट आ चुके हैं। लेट्स रिड्यूस आवर स्पीड नाउ। feet and then let the aircraft manage itself एयरक्राफ्ट अपने आप मैनेज करेगा 12,000 फीट। यहाँ तक आते आते हम 12,000 फीट तक आ जाएंगे, एंड दैट्स फॉर श्योर। ऑलराइट, ये इस्तांबुल है, यहाँ से हमने टेक ऑफ किया था और ये हमने रूट लिया था IFR रूट, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूट, सॉरी। और इस रूट के ज़रिए हम यहाँ तक आए हैं और फर्दर हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं और यहाँ बार्सिलोना में हम लैंड करेंगे। सो ऑलमोस्ट 3 आवर्स की जर्नी रहेगी हमारी। All right, landing gear down. Flight attendants, please prepare for landing. All right, let's prepare cabin. All right, flaps. There's no ILS, I think. Let's try. Cat 3 duo. Flap full. Right, checklist. ECAM memo set, cabin is ready. I don't think I am going down. That's fine.
I can try auto land, 2,500. but no, it won't allow me. That's fine. We'll do auto land. Disconnect. So you can see the runway. Let's take our aircraft down. My aircraft. Checked. A bit on a higher speed, but that's okay, we will manage. 100 above. Checked. 400. Now we will manage. $50, 40, 30, 20. Retard. 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 Thrust reverses, green. Decel. 60 knots. Manual braking, reverses off. Auto brake off. Thank you. Alright. After a bit difficulties, we have successfully landed in Barcelona airport. I welcome everybody in this beautiful flight with us, and we will quickly exit from the runway. और इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा टेंस माहौल हो गया था आखिरी में, because aircraft was not taking the requested path actually. So that's okay. हम runway exit कर चुके हैं और beacon light हमें on, strobe light हमें ऑफ कर देनी चाहिए, लैंडिंग लाइट्स हमें ऑफ कर देनी चाहिए, और APU हम अब ऑन कर सकते हैं. Alright guys, this was all about journey from Turkey to Spain, Istanbul to Barcelona, and I will see you guys in the next video. Later.